between 11:30 and 12:10, right? Like you caught the train, you hopped into the metro, you hopped into the metro, hop into, or get into. These are all methods of telling that you took metro. You you took a ride, right? So get into is more formal. Hop into. Hope nahi hop. HOP hop. Hop hop into is informal, right? Hop in is informal. Informal का मतलब क्या होता है? It is used among friends and all those things. Friends के सामने आप hop into बोल सकते हैं. Get into का मतलब आपको थोड़ा सा formal language में get into बोलना होगा, right? ठीक है. Okay, so you got into metro at 11:30, right? And you got down on, or you get off. Get off the metro. Get off means बाहर निकलना, right? और गेट ऑफ का मतलब बाहर निकलना. आप मेट्रो से बाहर निकले 12:10 पे. इस ड्यूरेशन में दो तीन चीजें हुई होंगी, राइट? यू माइट हैव सीन पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सीट, right? Somebody might be reading a news. Somebody might be trying to read a news. Somebody might be complaining. That okay, I'm not getting a seat and there is so much of rush. Somebody might be right, talking to someone, like this person is telling someone that I'm facing problem with in G20, and this person receives a phone. All of a sudden, he received a phone. Right, he received a phone and he talked to him, right? Hello, how are you? Hello, right? How are you? And then he got distracted. So lots of incident happens at the same time, right? These are called concurrent actions. Concurrent means happening at the same time. Concurrent means happening at the same time, or sequential, right? Happening in a sequence, one after another. Sequential is one after another. एक के बाद दूसरे इवेंट का होना को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल, राइट? और कंकरेंट मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम. लाइक हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो कंकरेंट एक्शंस जो होते हैं और वन आफ्टर अनदर जो एक्शन होते हैं, राइट, इसके भीतर बताने का भी तो डिफरेंस होगा. जैसे I got into the metro. I got into the metro, right? And I saw that there was heavy crowd. Heavy crowd. Right? People struggled. People struggle due to lack of space. It was difficult even to breathe. It was difficult even to breathe easily. So as you can see, it is happening all one by one. First this, second this, right? And then third this, and then fourth this. So this is a sequential event. One after another you noticed. Now people, right, commuters were it is not where, right? Many a times we say where, but it is not where. Commuters were, the pronunciation is were. हिंदी में जैसे वर बोलते हैं ना, वर और वधु वाला वर, तो यही pronunciation है, वर. ठीक है? commuters were facing difficulty. Right? What difficulty were they facing? They were facing difficulty in finding a seat.
Why? Right. At the same time, while they were traveling, they were traveling, while they were commuting, commuting to, while they were their destination, commuting to their destination. Now now over here now over here you can notice now over here you can notice that commuters were facing difficulty in finding a seat while they were commuting to their destination. In this sentence, one action is happening, like they were facing difficulty. The action is they were facing difficulty. One thing is happening, that they were facing difficulty, and at the same time, right, in finding a seat while they were commuting. At the same time, they were commuting as well. Commuting to their destination means one action is happening, right? They're facing difficulty, and another is they are difficulty in finding seats, and secondly, they are still traveling also. They are not stopping. They are traveling as well. Both of the actions are happening at the same time. Both of the actions are happening at the same time. So this, in this situation, we call concurrent actions. Concurrent means happening at the same time, right? I was talking to my father. I was talking to my father. I was talking to my father, and okay, I was talking to my father's while 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 commuters were discussing. Commuters were discussing about G20 summit. G20 summit, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर दो चीजें एक साथ चल रही हैं। जैसे आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर, मैं अपने फादर से बात कर रहा था, सो दिस इज वन एक्शन, टॉकिंग टू माई फादर। एट द सेम टाइम अदर कम्यूटर्स, 1 2 3 4 guys, they all were discussing about G20 summit. So these two actions are happening simultaneously at the same time. So this is what we call concurrent actions, right? So in this situation, we have couple of things to remember. ठीक है, अभी आपको मैं अगर बताऊं कि पास्ट सिंपल में हमने क्या किया। पास्ट सिंपल वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट प्लस V2 plus object, subject plus did not plus V1, subject plus did not plus V1 plus object. So these are the structures: did plus subject plus V1 plus object, right? Like I went to office, went to office. I did not go to office, did not go to office. This is all basic level thing, right? And did I go to office? Did I go to office? Okay, now this is about past simple structure, which we have learned already in some of our classes, right? And this is very basic structure, right? अगर आप इसके साथ struggle कर रहे हैं तो आगे की चीज आपको शायद समझने में दिक्कत होगी. But if you're not struggling with this, if you have understood it, that you won't face any problem. Right now, subject plus was or were plus verb ing plus object, right? Subject plus was or were not plus verb ing plus object, right? This is negative structure. And was or were plus subject plus verb ing plus object, this is interrogative. I was going to office. I was going to office. I was going to office. I was not going to office, right? Was I going to office? Was I going to office? So ये question mark हो गया, right? This is about
प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स, राइट? ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर है. दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर. So present simple, sorry, past simple and past continuous structure, right? Like I went to office and I was going to office. I went to office and I was going to office. There is a difference. I was going to office, right? The difference is very simple. One says that right now I am telling you that yesterday, whole yesterday in the morning, I went, मैं गया, office गया, right? I went to office. Now I went to office means one time action. I'm telling you, I went to office yesterday, right? Now, right now, I am telling about while I was going to office, what happened? While का मतलब क्या है? उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, राइट? लाइक 11:30 आई got into metro and 12:10 I got off the metro, right? So while during this time, इस टाइम के ड्यूरेशन में ये जो टाइम है, इस समय क्या हुआ, इस टाइम पर क्या हुआ, राइट? आई सॉ सम पीपल, राइट? आई रिसीव्ड अ कॉल, आई कुड नॉट गेट अ सीट, I talked to my father. I told my boss I will be late. Right. So these things happened. This is past. Right. While one action was going on, ये सारी चीजें हुई. एक जब एक्शन चल रहा था तो बहुत सारी चीजें हुई. Past continuous. Always we use, right? Use की जब बात आती है, स्ट्रक्चर की बात नहीं है. स्ट्रक्चर is very easy, right? I was going to office. He was going to office. She was going to office. You were not going to office. They were not going to office. We were not talking about this issue, right? People were not talking about this issue. Commuters were not talking about this issue. So this is very simple, right? अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो you are on very basic level, right? ठीक है. तो उस लेवल पे अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी और इसका सेंस क्या बनेगा, राइट? और व्हेन एंड व्हाइल का यूज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन एंड व्हाइल, व्हेन का मतलब क्या होता है? कब या जब. व्हेन मीन्स जब. जब मीन्स अ पॉइंट ऑफ टाइम. अ पॉइंट ऑफ टाइम. अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है उस मोमेंट में. It could be a momentary. It is a point of time. I received a call. It is precise point of time. It is precise point of time. Precise point of time. So this is what we call. In this situation, we use when. हम कब यूज करते हैं? When we are talking about precise point of time, right? And while का मतलब होता है period of time. While means period of time. Period means एक टाइम पीरियड का मतलब इतने से इतने देर तक, राइट? अब इसके अंदर एक पॉइंट हो सकता है, जैसे 11:30 यू आर गोइंग टू ऑफिस, 12:10 यू रीच टू योर ऑफिस. सो एट 11:45 you received a call. At 11:45, so 11:45 is point of time. 11:45 is point of time, and 11:30 to 12:10 is period of time. 11:30 to 12:10 is period of time. This is period of time, right? And this is point of time. So you need to understand this very clearly before we move on to something else. Period of time, right? Now, while and when का यूज कैसे होता है, यही सारी की सारी कलाकारी है जब हम पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, एंड इफ वी आर एक्सपर्ट एट यूजिंग इट, ट्रस्ट मी, telling about past is not an issue at all. So I have prepared some of the examples for you. Some, not only some, a lot many examples with a uh, lot of example sentences like, when I arrived home, I realized I I had forgotten my keys. तो यहाँ पे देखिए ये when I arrived my home में क्या होता है? जब. So this tells about point of time. When का मतलब क्या हो गया? Point of time.
दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तब मैंने क्या किया, तब मैंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि कार की चाबियां तो मैं घर की चाबियां तो भूल ही गया हूँ, राइट। ही कॉल्ड मी व्हेन ही फिनिश दिस वर्क, कब, जब उसका वर्क, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उसका वर्क खत्म हो गया, देन ही कॉल्ड मी, उससे पहले उसने मुझे कॉल नहीं किया। When the clock struck midnight, the fireworks began. Fireworks कब began हुए, जब घड़ी में 12 बज गए, struck सेम लेवल पे आ गया, right? She smiled when she saw the surprise party. अभी जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ का बर्थडे था और आपने क्या किया, पास का एक फ्लैट रेंट पे ले लिया, उसको बढ़िया से सजाया, राइट, बढ़िया से सब कुछ किया, और उसके बाद बोला कि आज हम अपने घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दूसरे के घर में और उस घर में हम आज रहेंगे। और वहां जाने के बाद शी हैज सीन, ओह माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल पार्टी, सरप्राइज पार्टी, और उसके सारे दोस्त हैं, राइट, और ऑल थे। तो उसके बाद वो देखने के बाद उसने स्माइल किया। तो दिस इज ऑल टेलिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेन द रेन स्टार्टेड, we quickly shout shelter, we quickly shout shelter, हमने तुरंत जो है सो शेल्टर ढूंढना शुरू कर दिया। क्यों, हम ऑफिस जा रहे थे भाई और हमारे कपड़े गंदे हो जाते तो दिन भर हम उन गंदे कपड़ों में कैसे रहते। तो ये पास्ट सिंपल के साथ आपको व्हेन का यूज दिखाया गया। अभी व्हेन जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस के साथ कैसे होगा, जैसे व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम्स, जब मैंने कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज बिजी इन सम एक्शन। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है वो कोई काम कर रहा होगा, उसी बीच में कभी मैंने कॉल कर दिया, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने पढ़ाई के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने उसे कॉल किया। तो दिस पर्सन इज स्टडिंग एट दिस टाइम एंड आई कॉल एंड ही रिसीव्ड अ कॉल, हेलो यस अंकल, राइट, आई एम बिजी विथ माय, तो हम यहाँ से उससे बात कर रहे हैं, ओके ओके कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, शी वाज कुकिंग डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट, he was taking I was attending online class when the power went out. I was attending online session when the power went out. When I entered the room, they were discussing the project. जब मैंने रूम में एंटर किया तो ये सारा का सारा क्या बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। व्हेन आई एंटर्ड द रूम दे वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, ही स्लिप्ड एंड फेल when he was running in the park, वो कब स्लिप करके गिर गया, जब वो पार्क में रन कर रहा था। when we were traveling we saw a beautiful rainbow, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे हमने एक ब्यूटीफुल रेनबो देखा। अब यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यूस के साथ भी हो गया। अभी वाइल्ड का कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, राइट। वाइल्ड के एग्जांपल में क्या है, व्हाइल आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क आई विजिटेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था। अब यहाँ पे देखिए, ये पीरियड की बात हो गई ना, यहाँ पे अपने आप डिफरेंस पता चल गया आपको, पास्ट सिंपल के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम, जब जैसे मान लीजिए 2005 से लेके और 2007 तक मैं न्यूयॉर्क में रहता था, राइट। तो मैंने विजिट किया कहाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को विजिट किया। व्हाइल आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क आई विजिटेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। शी रेड अ बुक व्हाइल शी वेटेड फॉर द ट्रेन, वो क्या कर रही थी, वाइल इस ड्यूरेशन में, जैसे मान लीजिए 11:15 पर वो ट्रेन पकड़ने के लिए गई और ट्रेन आई 12:30 पर, तो उसने 11:15 से 12:30 तक 1 hour 15 minutes क्या किया, राइट, she was waiting, right, so she read a book. One thing is she waited and she read a book, दोनों concurrent action है, एक साथ चल रहे हैं, right, so she read a book while she waited for the train. While they were on vacation they explored the ancient ruins. एंशियंट रूइंस का मतलब क्या है, जो सारी चीजें खराब हो गई हैं, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, खंडर हो जाती हैं। तो while they were on vacation they explored the ancient ruins. He fixed the car while it was still daylight. जब तक दिन का समय था तभी तक उसने कार को फिक्स कर लिया, फिक्स कर लिया मतलब रिपेयर कर लिया। फिक्स का मतलब यहाँ पे होता है रिपेयर, फिक्सिंग अ कार का मतलब होता है रिपेयरिंग अ कार। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन फिक्सिंग का मतलब रिपेयरिंग भी होता है, ठीक है। While I worked at the bookstore, I met many interesting people. जब मैं बुक स्टोर पे काम करता था तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, राइट, ठीक है। नाउ यही चीज अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते तो कैसे हो रहा है, जैसे देखिए, while she was watching TV the phone rang,
while she was watching टीवी, जैसे टीवी देखना शुरू किया उसी समय फोन रिंग हुआ। तो ये एक टाइम का एक्शन है। वी वर चैटिंग while द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, हम बातें कर रहे थे जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे लेसन, राइट। while they were hiking they spotted a rare bird, जब वो हाइकिंग कर रहे थे तब उन्होंने एक रेयर बर्ड देखा। ही वॉज कुकिंग डिनर while listening to his favorite music, राइट। दोनों चीजें एक साथ चल रही थी। while I was gardening I accidentally planted the wrong plants। अभी ये while and when का पूरा यूज है, इसका एग्जाम्पल है, ये आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान से सुनिए और समझिए, राइट। एक्सप्लेनेशन, राइट। ऑब्वियसली ये तो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और वीडियो भी अपलोडेड होगा यूट्यूब पे, तो आप आराम से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस इट लेटर, राइट। व्हेन एंड व्हाइल जो होते हैं वो कंजंक्शंस हैं। व्हेन एंड व्हाइल आर कंजंक्शंस, पार्ट ऑफ कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कंजंक्शंस हैं, राइट। एंड वी ऑफन यूज टू लिंक एक्शंस और इवेंट्स इन द पास्ट। हम इसका क्यों यूज करते हैं? एक्शंस और इवेंट्स जो हैं वो पास्ट में हुए, उसको लिंक करने के लिए यूज करते हैं, right? The choice between using when and while depends on the specific context of the sentence। ये specific context of the sentence पर depend करता है, right? और लेकिन दोनों करेक्ट है, लेकिन अलग अलग मीनिंग देता है। जैसे पास्ट सिंपल के साथ अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या कहता है? पास्ट सिंपल, सम एक्शन अकर्ड immediately after another। जैसे when I arrived home, right, I realized I had forgotten my keys। मतलब पहले क्या हुआ? घर पहुंचा, फिर रियलाइजेशन हुई किस चीज की? कि forgotten the keys, कहीं पे चाबी भूल आए हैं। The arrival home and the realization of forgotten keys happen sequentially, एक दूसरे के बाद, इसके सीक्वेंस में, एक के बाद। वाइल अगर हम पास्ट सिंपल के साथ यूज करते हैं तब क्या मीनिंग होता है? जैसे दिस स्ट्रक्चर टिपिकली इंप्लाइज दैट टू एक्शंस और इवेंट्स वर हैपनिंग कंकरेंटली, एक साथ ही दो एक्शन और इवेंट चल रहे थे। जैसे, और किसी के ऊपर भी स्पेसिफिक एम्फेसिस नहीं है। जैसे while I lived in New York I visited the Statue of Liberty, मतलब मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में रहने के ड्यूरेशन में वॉच किया, और इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब एक के बाद दूसरा नहीं, ये उसी ड्यूरेशन में हुआ, right? So this is the meaning of concurrent। concurrent is a key word over here, and you should understand while के साथ हम concurrent और when के साथ sequential का यूज करते हैं, right? अभी when के साथ जब past continuous यूज होता है, ठीक है, when जब past continuous में यूज होता है तो ये इंटरप्टेड एक्शन की बात करता है। ये क्या बात करता है? इंटरप्टेड एक्शन की, ठीक है। Interrupted action मतलब when I called him he was studying for his exams। when I called him he was studying for his exams। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? when का यूज करने से एक एक्शन जो पास में चल रहा था वो इंटरप्ट हो गया। द फोन कॉल इंटरप्टेड द ऑनगोइंग स्टडी, राइट। वाइल जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज करते हैं तो हम कंकरेंटली बताते हैं, राइट। अगेन आप देखिए, ठीक है, जैसे while watching TV and the phone ringing occurred at the same time। while she was watching TV the phone rang, ठीक है। तो when and while का यूज हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन when जो है वो सीक्वेंशियल बताता है कि एक के बाद एक हुआ, और कंकरेंट अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? हम यूज करेंगे while का। कंकरेंट एक्शन के लिए while का यूज करेंगे, सीक्वेंशियल के लिए when का यूज करेंगे, राइट। देयर इज अ चॉइस, ओके। अभी कनेक्शन ऑफ टाइम की अगर बात करें तो मैंने तो आपको बता ही दिया, व्हेन का यूज जो है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे व्हेन आई अराइव्ड होम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ये, राइट। एंड आई रियलाइज दैट आई हैव फॉरगॉटन माय टी, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना वो क्वेश्चन में है, राइट। व्हेन आई अराइव्ड होम, वाइल जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे वाइल आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क आई विजिटेड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो उस ड्यूरेशन में 2005 से 2007 के बीच में। तो ये है सारी कहानी पास्ट सिंपल की और पास्ट कंटिन्यूअस की। इसी सीक्वेंस से, इसी से हम सारी कहानियां बताते हैं कि उस समय क्या हुआ, वो कंकरेंट एक्शन था या सीक्वेंशियल एक्शन था, राइट। पास्ट और प्रेजेंट दोनों के, पास्ट और कंटिन्यूअस, सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों के साथ हम व्हेन एंड व्हाइल का यूज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी,
राइट। और अगर नहीं समझ में आई है तो अभी हम डिस्कस करेंगे या बाद में भी डिस्कस